हेलो हेलो हेलो। आई होप लाइव स्टार्ट। कैसे हैं आप सब? आज हम इस लाइव में पढ़ेंगे पॉस्टैक कागज। आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? मेरे को देखना पड़ेगा कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। और चैट्स क्यों डिसेबल हैं? चैट्स को अनेबल कर देते हैं। देखना पड़ेगा। और आई होप लाइव सही जाए। चैट्स डिसेबल क्यों हैं? क्योंकि ये मेड फॉर किड्स हो गई है। क्यों हो गई? एक सेकेंड आप वेट करिए, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। ओके, थोड़ी मैं सेटिंग कर रही हूँ जब तक आप लोग आ जाइए। देखते हैं क्या होता है, अगर हम कर पाते हैं कि नहीं ये लाइव। हेलो हेलो एवरीवन। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर वीडियो स्टूडियो पे गए। ठीक है, उसके बाद हम गए कंटेंट पे। उसके बाद हम गए लाइव सेशन में। उसके बाद हम इस पे हमने किया नो, इट्स नॉट फॉर किड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम गए मोनेटाइजेशन पे। हमने किया, सेव किया। ठीक है, अब चैट शायद क्लियर हो गई है। देखते हैं इधर। ठीक है ठीक है। एक बार फिर से जाते हैं लाइव पे और देखते हैं। हाँ, शायद आ गई है। हेलो हेलो। Hello, thank you for confirming that the okay, let's get started. Hmm, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉडकास्टिंग। ठीक है, सब लोग आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि व्हाट इज पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग के बारे में बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो मैंने एक ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है
तो हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और मैं आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। Podcasting is the preparation and distribution of audio files using RSS feed to the computers of subscribed users. These files may then be uploaded to the streaming services which users can listen to on their smartphones or digital music and multimedia players like an iPod. A podcast can easily be created from a digital audio file. ठीक है, कुछ नहीं है एक्चुअली। पॉडकास्टिंग एक तरीका बनाया गया है ताकि जैसे हम वीडियोस बनाते हैं वैसे हम ऑडियोज भी बना पाएं और हम अलग अलग मीडियाज पे, मीडिया प्लेयर्स को, मीडिया जो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ पर हम अपना पॉडकास्ट डाल पाएं ताकि लोग उनको मैक्सिमम तरीके से सुन पाए। जैसे रेडियो शोज होते थे ना, उसी तरह से ये पॉडकास्ट शोज होते हैं। Podcasts are typically available as a series of pre-recorded talk radio shows that users can download through their computer or mobile devices. Podcasters often publish episodes on regular schedule. ठीक है, जो पॉडकास्टिंग होती है उसका क्या होता है कि मतलब आप पहले से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो सामने वाला इंसान होता है वो उसको सुन भी सकता है और डाउनलोड भी करता है, ठीक है। देयर इज नो प्रीस्क्राइब्ड फॉर्मेट, लेंथ और स्टाइल फॉर अ पॉडकास्ट। दे मे कवर अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरिया बट an episode often focuses on one topic or story. Some podcasters read from a script while other improvise. जैसे भी मैं भी जो काम कर रही हूँ, मैं तो ये लाइव कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग? रूबल सॉल्यूशंस पे लाइव कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इसी चीज को अगर ऑडियो में सेव कर लूंगी तो मैं एक तरह से स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ। या फिर कई लोग इम्प्रोवाइज भी करते हैं, कई लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं फिर पॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है। The cultural millennia supporting podcasting is sometimes referred to as podosphere. In the same way, the cultural environment of blogging is called blogosphere. ये जो कल्चर आया है इसको क्या बोलते हैं? पोडोस्फेयर। और जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। The content producers have increasingly turned to podcast as an inexpensive and user-friendly distribution channel to reach a large audience. ठीक है? Musicians and bloggers were early adopters of podcast. Mainstream media organizations such as the New York Times, National Public Radio (NPR), and the Washington Post have since adopted the format. Apple iPhones come with a pre-installed podcast directory. Many podcasts are free to download and listen through Apple Podcasts. Some podcasts are associated with websites to provide additional resources and community forums for fans. Podcasts are sometimes referred to as digitally disruptive formats because they change how consumers access content. They also change how advertisers monetized it. Podcast can be monetized through subscription, purchased ad time, or crowdfunding platforms like Patreon. मैं देख रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमें कितना टाइम हो गया है? 9 मिनट्स हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आज हम काफ़ी काम करेंगे। हाउ डज पॉडकास्टिंग वर्क? Podcasts are digital audio content distributed over the internet using a podcast hosting service.
These services store all podcast episodes in one location and automate the generation of RSS feeds. These feeds list all the podcasters' episodes. They can also automatically submit the RSS feed to podcast directories where listeners can access them. The following are some examples of podcast hosting platforms: Buzzsprout, Podbean, Podcast Website, Simplecast, Spreaker. A podcast directory is an application that listeners can use to search for, store, and listen to podcasts. When listeners subscribe to the podcast, their RSS feed automatically updates their device with a new episode. Some examples of these directories are the following: Apple Podcast, Blueberry Podcasting, Podbean, Spotify, TuneIn, Stitcher. Spotify तो आपने ज़रूर सुना होगा, ये म्यूजिक का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. Podcasts may also be uploaded directly to the Pat1, SoundCloud, and YouTube streaming services. Podcast production is not complex. A podcaster can save a digital audio files as an MP3 and upload it to the hosting platform or other service provider. The MP3 file has its URL inserted into an RSS extensible markup language document as an enclosure within XML tag. Podcast can be registered with the content aggregator like ALL Top or Feedly, which adds them to the directories. Podcasts are generally audio files, but the same process can be used to prepare and share image, text, and video files. How to create a podcast? One second. I need to do some important updation. One second, please hold on. We will continue the live session again, and it's wow, very nice. कम से कम ओके, अब हम आ गए हैं उस पर. We have to open this. I have to share it with my friends so that many of you can come online and have a one second. Okay, done. ठीक है, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं. हाउ टू क्रिएट ए पॉडकास्ट. सबसे पहले हम पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट अ न्यू पॉडकास्ट. द फॉलोइंग पॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आर नीडेड टू रिकॉर्ड एन ऑडियो फाइल. सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पॉडकास्ट माइक्रोफोन. USB microphone are relatively cheap and easy to use. The capture audio. The built-in microscope on the laptop or smartphone also works. A professional quality recording mic should be considered if a high quality podcast is the goal. Second is the recording application. Many devices come with the free audio recording applications such as Apple's voice memo apps to record and save audio. Audacity is a free audio recording software that works on the desktop operating system like Microsoft, Apple, macOS, and Linux. Recording application may have editing software and enable exporting of audio files. Hosting site. Once recorded, a podcast can be distributed using a podcast distribution platform such as Podbean, Postcard websites, or speakers. Here are 9 steps
to recording a podcast using a Windows computer and a USB microphone. Plug the microphone into the computer. सबसे पहले microphone लगा दीजिए. Install the free Audacity program or another digital audio application. Then GarageBand is included with Apple iOS and Mac. Windows 10 comes with pre-installed voice recorder app. Open the program and set the audio input to recognize the audio from the microphone. Test the microphone to ensure that levels are approximately and responding to the audio in the room. Press the record button and speak to the start recording the intro. If necessary, edit the podcast after using digital audio program, built-in tools like Adobe Audition. Export the audio files using the digital audio program export function. Upload the audio files to an audio sharing platform such as SoundCloud. You can also use a podcast specific platform like Podbean. Share the link to the published podcast on a social media and elsewhere. Podcasters may follow a formal script or go more informal. Just use show. I hope my voice is really clear. I will listen to this live session later, and if you anyone is comfortable of writing in the chat, then you can write that voice is clear. Now comes the benefits of podcasting. It is easy to create. All it takes to make a podcast is microphone, audio software, a computer, and an internet connection. No additional knowledge or equipment is needed. One simple way to create a podcast is to speak into voice notes app on a smartphone. Easy to distribute. Podcast can be uploaded and made available to the listener using a free YouTube or SoundCloud account. Any service or devices that can host an audio file can host a podcast. Regulation free, there are no federal communication commission or other government regulations for podcasts. This enables a level of free speech that may not be possible on more established platforms like television and radio. Long form podcasts can be any length. Some podcasts are over 3 hours long. That length is unusual for other forms of media which lean down snackable content. The long form structure enables a more in depth treatment of topic that is not as relevant in other media. Informative, on demand, valuable market tool. The best podcast help product marketers reach niche audience. They are also a consistent touch point that followers can return to. They are an extensive multi-channel marketing tool because they provide helpful information without always trying to sell something. They also offer good podcasts often include guests, and podcast can link to those guest web pages in the show notes. Now, some of the examples of podcast are you can see टेड शोज होते हैं, सीरियल्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉडकास्टिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है. ये क्या चीज़ है? ओके, ये हो गया है. हमारे पास हो गए हैं 19 मिनट्स हो चुके हैं. अब मैं फटाफट करके इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अदरवाइज. तो द हिस्ट्री ऑफ पॉडकास्टिंग इज podcasting has existed since 1980s. Wow, अच्छा.
In its earliest form, it was called audio blogging. People will record their pieces and share the audio content over the internet, like auditory blogs. In 2004, Ben Hamlis first used the term podcast to describe this content. The term was a combination of words iPod and broadcast. The growth of podcast took off. फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी देख रहे हैं हमारा लाइव तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। करी हैज़ बीन द होस्ट एंड को होस्ट ऑफ सेवरल पॉडकास्ट. He is referred to as the podfather. In 2019, Spotify, two prominent podcast hosting comes up. That same year, Edison research issues was there. Okay, overall basically आपको समझ आई होगी कि पॉडकास्ट, व्हाट इज पॉडकास्टिंग, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और आप पॉडकास्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और पॉडकास्टिंग कैसे वर्क करती है और क्या क्या बेसिक चीज़ें पॉडकास्टिंग के लिए चाहिए होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I will say that please do like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, that is Rubal Solutions. It will really help us to grow. Thank you. Have a nice day. Love, love.